Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. So let's try to go for revision of quantum mechanics, and we will just focus on those area which will improve your quality of preparation, and we will just try to see how we can revise the whole thing into next 3 days. So obviously, when you are talking about quantum mechanics, it is very important topic, and it is a very huge topic also. Lot of thing to revise, but what do you have to do? You have to revise first on those area which will help you in a calculation. The concept part and each and everything we have done in our class, you have to just stick to your notes, and then you have to just revise the PYQ. But I will just tell you in these 3 days, in these 3 classes, that where you have to focus, and if you needed, I will also give you some problem or some formula based on that particular topic. Okay. So I have just divide the whole syllabus in 3 days. Today I will go for postulates, mathematical tools, one-dimensional system, and this is the, if I am talking about one-dimensional system, then free particle, Dirac delta potential, as well as your harmonic oscillator. And in free particle, we are just going to explain each and everything different type of the different type of box. So this is the first thing. And second thing, second part we will go for in the next class, that is 2-dimension, 3-dimension system, and the angular momentum algebra, spin, hydrogen atom, as well as a scattering. That will be the in the second part, and the last part we will go for different type of approximation method and some more, and relativistic quantum mechanics and all these things. So these are the most important uh, thing that we have to focus. So let's just go for first the postulates part. So you have to just revise the postulates, and there is nothing to revise it. You have to just remember the whole thing, and you have to apply it again and again. So in a quantum mechanics, if you are solving any problem, you have postulates. So you have to just go on that. But before that, what is the trend of examination? The trend of examination now is based on two things. One thing is using efficiently the Dirac notation. So now in the last two examination, they have given operator also in a form of Dirac notation, such that they have given operator something like this. Let's say they have written Hamiltonian is something, let's say epsilon naught A plus some E B and B, something like this, where A and B are the orthonormal vectors. So now you have to prepare your class, you have to prepare your for your examination with this type of Hamiltonian, how you will write this type of Hamiltonian in a matrix form, how you will find the eigenvalue, and all these things. So it is very important thing that you have to prepare first thing matrix representation, matrix representation of operator. So obviously, if you have any matrix A, the matrix element is known as AMN, and this can be written in a basis of phi m A phi n. So this is your matrix element, and you can easily write your operator in term of matrix. So in last two examination, this is the actual trend where you have to just focus on, and you have to revise some problem based on that. Okay. So first thing is that you have to represent matrix, and second thing, operators
in functional form. So here you have to use the concept of mathematical physics, where you will write your operator as a functional form. For example, you have operator e to the power I a. You can have operator e to the power a, mainly exponential or sinusoidal operator. Just try to, and how you will find it? You will just do the Taylor expansion and you can write this particular operator. And in general, you have to very much focus on unitary operator or unitary matrix basically. So we have basically relationship of unitary matrix. We know the property of unitary matrix. The unitary matrix have its own inverse. Okay, we all know that its determinant is +1 and -1, and you can easily use this particular unitary matrix. Because in the quantum mechanics, the unitary matrix is very important. For example, if I am talking about a matrix, let's say this matrix is e to the power I ht upon h cut. This is one type of unitary matrix which will tell you about the time evolution. You have e to the power I a p upon h cut. This is translation matrix, and this is also unitary matrix. You have e to the power I and some angle, let's say this angle is theta dot L upon h cut. This is also some type of unitary matrix. So you have to prepare all this thing in a very nice form. How you will open it, what will be property of this particular different operator, and that will also depend on what is property of P, what is property of H, what is property of L. So at least you have to prepare these three type of unitary matrix in a very large extent. This will tell you about energy, this will tell you about translation, and this will tell you about the rotation. So this is very interesting, and you have to prepare all these three unitary matrix. And obviously, you have to also go for the commutation relation, the commutation of a function, and all these things. So here you have to also prepare the basically commutation. And now you have to be very much careful. Now they will not give you a very simple commutation, something like x square and px. No, they will not give you. They will give you commutation where the function is going to involve. So you have to prepare all this thing. And in the booklet and in the class, we have also discussed different type of problem. For example, you can go for commutation of x and sine p. And let's say x and sine p. What will be commutation of all this? You can go for commutation of e to the power a and e to the power b, where a and b have some property. Suppose you can have commutation between a and b is equal to 1, something like this. So you have to prepare your commutation chapter with the help of functional operator. This is very important in recent examination trend. And here you will find the concept of this Poisson bracket will also help you. Okay, you can just use this thing with, and you know that commutation of two function, let's say this function is x and p, and another function f2 is also function of x and p. And if we want to go for the Poisson bracket, then what will be Poisson bracket of this? What will be Poisson bracket of this? Del f1 upon del x, del f2 upon del p minus del f1 upon del p, del f2 upon del x. And this is your Poisson bracket. But if you are going for the quantum mechanical technique, then you have to multiply it by IH cut. So this is one of the things that you can recheck your answer. Or if sometime you can directly use it, but sometime you have to just go for the Taylor expansion. Why?
because the order of operator is very important, isn't it? You have to just remember this particular thing. A, B, and C. Here you have to be A and C. B will be afterward, and you have B and C. A will be before the B. So you have to remember the order is very important. So sometime what will happen when you are going to use this particular formula, you can miss the relevance of order. So I always prefer to do this type of problem with help of Taylor expansion. And then you can easily recheck your answer with this particular thing. Otherwise, you have to just go and practice a lot of question based on this thing. So it is my basic intuition that in this examination, there will be at least one question will be from the function of operators. At least one question, and that operator will be in general a unitary operator. So you have to be prepared very nicely. And obviously, if I'm talking about this unitary operator, then this is also a very important thing. Sigma dot n cap, isn't it? This type of operator is also very important, where sigma is Pauli spin matrix. It will give you some beautiful symmetry and you can easily find, but we will discuss it in the next class in a very detailed manner. But initially, you have to focus on that, and then you have to go for postulates. Okay, and obviously the function, the square integrability, ये सब तो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है. You have to just work out whatever we have done in class. Okay. Now let's try to go for where you have to focus on basically postulates part, and then we will go for different type of system. So first thing you have to focus on here, and this particular operator of a function of different operators. And second thing, you have to focus on postulates. So if I am talking about postulates, then obviously all postulates are very, very important. You cannot neglect it, and you cannot afford that without understanding postulates, you can do quantum mechanics. This is simply irrelevant. So obviously, you have to work postulates in a very nice form, and you have to remember all the postulates in a very crystal clear manner. So the first postulates is all about state psi, and obviously this will be a square integrable function. And mod psi square is equal to, is basically identified as probability density. And if I am talking about this probability density, that will tell you the particle between 0 to A, there is some probability between 0 to A, that is mod psi square dx between 0 to A. And here you have to go for normalization part. So always you will take care of the normalization. In the examination, we miss this normalization part, but yes, you can just go for this. And one of the very interesting thing here, it is very interesting thing that you have to work in the last two examination, they have given this type of problem. So what is this particular thing? Suppose I am writing psi is equal to something Cn phi n. Suppose, and yes, postulates 1 will also tell you that you can create a state with the superposition of different state. So there is not any problem. Now this psi is equal to nothing. Sorry, this will be something Cn phi n and summation over n. And what you have to do? You have to write psi and psi. You have to write psi and psi. Something like this, or then what you have to do? In general, people will just write this thing mod Cn square n. This is correct if this phi n is orthonormal. If this phi n is orthonormal. But sometime
you need to write the whole this scalar product as a summation form. So when you will write this whole the scalar project, what you have to do, if you are writing your kit in this notation, then always go for your bra with another index, and that value is equal to cm phi m. Always try to write something like this. अगर आप किट को n के फॉर्म में लिख रहे हो तो ब्रा को आप m के फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे. ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और लास्ट 2 ईयर में में एक क्वेश्चन हर एक बार इस कॉन्सेप्ट पर लेकर आया है कि आप समेशन किस तरह करते हो. एंड नाउ व्हाट विल बी योर साई? दैट विल बी सिंगल समेशन और डबल समेशन? That will be double summation. Cm star Cn phi m phi n. Now, if it is orthonormal, then it is converted into single summation. Otherwise, it will create a havoc. Suppose कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपको पूरे सीरीज को ओपन करना हो, कोफिशिएंट को इक्वेट करना हो, then obviously it will create havoc. And now in the last 2 years, we have this sort of trend where we need to equate the coefficient from left hand side as well as in right hand side. And in the left hand side, we have a series. In the right hand side, we have the series, and you have to just go for the summation part. In last year also, this question was come. Before that, this question was come. You can just go for our playlist of previous year, and you can see this question very, very carefully. So you have to work on this. And obviously, the second postulates is very interesting. That is probability. You have this particular operator, and this is your eigenstate is equal to an phi n, and probability of getting an on any state psi is basically phi n psi mod psi square, psi and psi. So this will be your probability of measurement of an. And obviously, if you are going to, this is second, this is third postulates. This is second, and this is third postulates. So you have to always take care of all these things. And yes, if you have any confusion, you can just go to your copy and revise it. And obviously, you have to now prepare for those problems where degeneracy is coming there. So if degeneracy is coming there, you have to just add all this probability, isn't it? और ऐसे प्रॉब्लम कहाँ आते हैं? इन जनरल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में, हाइड्रोजन एटम में, जहां पर डिजेनरेसी रहती है और उसको आप इजिली एड ऑन कर सकते हो. सो प्लीज यूज दिस पोस्टुलेट्स. जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसे आप एक बार देख सकते हो. एंड देन you have a fourth postulates. That fourth postulates is all about that your psi n, psi will be project in a direction of phi n if your measurement is an. If your measurement is an, then psi will projected in a direction of phi n. We have discussed this thing in a very detailed manner, so I don't think there is any problem, but you have to just revise this and make up your mind which type of question can. And here there is only one question I have asked in your examination, that will be from the angular momentum algebra. So okay, so you have to prepare this type of question. Just measurement after state, just measurement after state. The new operator is going to measure it. Then what is going to happen? So you have to prepare it very nicely. And last but not the least, there is always a one question from the time evolution of state. There is always a one question. And what will be that? So you have to just go for Schrodinger equation. So H phi n is equal to IH cat del phi n upon del t. This is your time dependent Schrodinger wave equation. And you know that phi n t is equal to phi n 0 e to the power minus I en t upon h cat. And
the solution of Schrodinger wave or solution of Hamiltonian is also known as stationary state. So you have to also work for a stationary state. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, आप देखोगे पिछले 2-3 साल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई भी आपको एक वेक्टर दे रहा है, हैमिल्टोनियन दे रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करेगा, कौन सा वेक्टर टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करेगा, कौन सा फंक्शन टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करेगा. सो ऑब्वियसली दे आर आस्किंग इनडायरेक्टली अबाउट द स्टेशनरी स्टेट. So you have to just go for understanding the stationary state, और इसके लिए ग्रिफिथ की पूरी एक पेज है, आप उसे बहुत आराम से पढ़ सकते हो. Okay, I will send you that page also. I have previously also sent you this particular page, but फिर से मैं आपको चाहो तो send कर दूंगा. And obviously work for a stationary state. Work for stationary state. Okay, so this is one of the very interesting thing. And obviously the time evolution of any state can be written as Cn phi n e to the power minus I En t upon h cut. So this you can just go for this. And once you know the time evolution of any stationary state, then it is obviously you can calculate when your state is going to orthogonal to the initial state, when your state is going to parallel to initial state, all this thing you have to work. So one question will 100% will be there from this time evolution of a state. और ऑब्वियसली जब आपको दो स्टेट ऑर्थोगोनल है तो आपको डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा, और जब दो स्टेट पैरेलल हैं तो आप उन दोनों के ऊपर उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 करनी होगी. इसके थ्रू हम प्रॉब्लम को करेंगे, और हमने जो भी प्रॉब्लम किया है आप उसे फिर से रिवाइज कर सकते हो इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एज वेल एज इन अ फंक्शनल फॉर्म. मैंने सेम प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में भी बताया है, एज वेल एज मैंने उसे फंक्शनल फॉर्म में भी बताया. मैं आपको प्रॉब्लम फिर से रिवाइज तो नहीं, बट आपको बता देता हूं कौन सा प्रॉब्लम हमने किया था. सो यू रिमेंबर h phi plus is equal to E naught phi plus and h phi minus is equal to minus E naught phi minus, and your psi t is equal to 0 is basically phi plus phi minus. So from here you can calculate after what time this psi t is orthogonal to psi 0. You can calculate after what time psi t is parallel to psi 0. You can calculate each and everything. Okay, so this is very important. और यहां पर भी हो सकता है आपको बेसिकली सीरीज की जरूरत पड़े. h को हो सकता है एक ऑपरेटर फॉर्म में दे दे और मैट्रिक्स फॉर्म में दे दे, और फिर आपको यहां पर चीजों को इक्वेट करने की जरूरत पड़े. सो प्लीज ये हमेशा ध्यान में रखो कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोफिशिएंट को इक्वेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एंड ऑब्वियसली यू हैव टू आल्सो वर्क फॉर आफ्टर व्हाट टाइम मॉड साई टी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड साई 0 स्क्वायर. ये सारा फॉर्मूला आपकी कॉपी में है और आप इसे इजिली कर सकते हो. ठीक है, सो यू हैव टू फोकस एटलीस्ट ऑन दिस एरिया and you have to go for next part. Okay, यहां तक कुछ पूछना है? If you want to ask anything, you can just suggest me. हाँ बताओ. What time psi t is parallel to psi 0, ये कैसे करेंगे? What time psi t is parallel to, आप psi t निकाल लो, psi 0 पता है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये क्या होगी? 1 होगी. ठीक है, ये भी कर सकते हो. नहीं तो आप psi t लिखो और psi 0 को लिखो और दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करो. दोनों का सेम कोफिशिएंट होना चाहिए, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सॉटन? यस सर. ओके, आप इससे भी कर सकते हो, या तो फिर आप क्या करोगे, यू विल राइट psi t और इसको किससे इक्वेट करो? psi 0 से. अब इन दोनों में क्या होगा, दोनों का कोफिशिएंट आप ले लो, तो किसी एक का कोफिशिएंट को कॉमन ले लो और दोनों के कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर सकते हो. C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू दोनों तरफ क्या होगी? सेम होगी. तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो.
ओके, एंड यू विल गेट द सेम थिंग। और मैंने क्लास में किया हुआ है, डोंट वरी, मैंने क्लास में किया हुआ है, मैंने प्रॉपरली इस प्रॉब्लम के थ्रू इसे सारा चीज समझने की कोशिश की है। ओके, सो एक प्रॉब्लम कर सकते हो आप इसको जा करके, एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, और मैं आज कुछ प्रॉब्लम भी दूंगा आपको, डोंट वरी। ओके, एनीवे, सो नाउ लेट्स डायरेक्टली गो फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जहां पर हमें ये सारा यूज करना होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये पोस्टुलेट्स आपको अलग से दिए जाएंगे और पार्टिकुलर बॉक्स से क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे। यू हैव टू यूज ऑल दिस पोस्टुलेट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम। सो उसी में सब जगह पर इसका यूज होगा, सो यू कैन नॉट लीव दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर फर्स्ट अ फ्री पार्टिकल के लिए क्या क्या हमें प्रिपेयर करने हैं वो आप समझ करके रखो। ओके, नाउ एक और आपको चीजें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरनफर्स थ्योरम। सो व्हाट इज दिस? dA upon dt is equal to 1 upon IH cut, expectation value of commutation of A and H plus del A upon del T। बहुत लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी एक ऑपरेटर है एंड दैट ऑपरेटर इज इवॉल्विंग विद द टाइम और नॉट। टाइम के साथ तो चेंज होगा या नहीं, अगर आपके पास कोई हैमिल्टोनियन है या नहीं, टाइम के साथ चेंज होगा या नहीं, या आपके पास कोई हैमिल्टोनियन है या नहीं। और इन जनरल आपके पास जो ऑपरेटर होते हैं वो टाइम से एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू ओनली चेक वेदर दैट ऑपरेटर इज कम्यूटिंग विथ हैमिल्टोनियन और नॉट। बट क्वेश्चन कुछ इस ढंग से दिया हुआ रहता है कि वो समझ में नहीं आता है क्या करना। अगर आपसे कोई बोले कि ऑपरेटर ए इज जस्ट फाइंड द कम्यूटेशन बिटवीन ऑपरेटर ए एंड हैमिल्टोनियन, आप इजिली कर लोगे। अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है कि दिस इज योर ऑपरेटर एंड वेदर इट इज इवॉल्विंग विद द टाइम और नॉट। लास्ट ईयर भी आया था पॉलीस्पिन मैट्रिसेस को लेकर, उससे पहले भी आया था स्पिन मैट्रिसेस को लेकर के। सो ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और इसका आप दूसरा भी यूज करना होगा आपको, द फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। सो अगर आप मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू डायरेक्ट वेव फंक्शन से निकालोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो हाउ यू विल कैलकुलेट इट? You have to just calculate the expectation value of x, and if expectation value of x is a function of time, then the expectation value of momentum can be written as m dx upon dt, and you can use this particular thing. Are you getting my point? So आप यहां से देख सकते हो 1 upon I h cat x, और अब डायरेक्टली आप, ये आपको पता है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो योर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैन बी इजिली राइट, बट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जस्ट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिया है लेकिन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में वेव फंक्शन दिया है, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू just go for a Fourier transformation for momentum and then you can go for this। इस तरह भी कर सकते हो। और कई बार ऐसा होगा कि कोई आपको वेव फंक्शन ही दिया हुआ है, सपोज यू हैव अ वेव फंक्शन समथिंग लाइक psi x is equal to x into a minus x, और इसके ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में आपको ऑब्वियसली पूरी तरह से इसके ऊपर रिलाई करना होगा। सो ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर
of this type of problem. Okay, so इसका फायदा आप बहुत तरीके से ले सकते हो, बट इसके ऊपर एक प्रॉब्लम 100% आपके लिए प्रिपेयर किया गया है कि देयर इज अ सम ऑपरेटर. देखो दो तरह के क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन ये होते हैं कि देयर इज अ वेक्टर and which is evolving with the time or not. That is different question. A state psi is evolving with time or not. This will tell you all about the stationary state. ये आपको देखना पड़ेगा. और दूसरा क्वेश्चन होगा ऑपरेटर A is evolving with time or not. So this is another question. तो यहां मैं ऑपरेटर की बात कर रहा हूं. अगर किसी वेक्टर के बारे में दिया और हैमिल्टोनियन दिया है तो आप स्टेशनरी स्टेट चेक करोगे, और यहां पर अगर ऑपरेटर दिया है और हैमिल्टोनियन दिया हुआ है तो उनकी कम्यूटेशन चेक करोगे अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट है तो. अदरवाइज ये पार्ट भी रोल प्ले करेगा. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स गो फॉर अ फ्री पार्टिकल. फ्री पार्टिकल में क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है. सो ऑब्वियसली यू हैव टू, अब आपको देखो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स की चीजों के ऊपर भी. सो जस्ट गो एंड डू योर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ वेरी नाइस वे. और उसके ऊपर क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे बहुत दिनों के बाद, अब फिर से आने का चांसेस है. ओके, सो यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर दीज टू फॉर्मूला, है ना, कि किसी भी फंक्शन का अगर पोजिशन स्पेस लिखा हुआ है तो के स्पेस में वो कैसा दिखेगा, और अगर के स्पेस है तो पोजीशन स्पेस में कैसा दिखेगा. सो यू हैव टू वर्क फॉर दिस फॉर्मूला वेरी नाइसली, एंड दिस विल बी 1 अपॉन √2 पाई, एंड दिस वैल्यू इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई एक्स जीरो ई टू द पावर माइनस आई के एक्स dx. और इसी को अगर आप चाहो तो मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हो. That value is 1 upon 2 pi h cat minus infinity to plus infinity psi x 0 e to the power minus px by h cat dx. इसके ऊपर क्वेश्चंस आने ही आने हैं. 100% आएंगे क्वेश्चन इसके ऊपर. कोई भी आपको वेव फंक्शन दे देगा एंड दे विल आस्क यू द ग्राफ ऑफ योर मोमेंटम, ग्राफ इन मोमेंटम स्पेस. एंड लास्ट ईयर जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ था दैट दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द फ्री पार्टिकल, है ना. अगर साई एक्स साई है 1 है ए है, इफ योर साई एक्स इज ए, बिटवीन एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए एंड 0, अदरवाइज देन व्हाट विल बी फाई के. सो यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, है ना. 1 अपॉन रूट पाई ए साइन के एक्स अपॉन के, sorry, Ka upon A. This will be your phi K. If this is your psi x, you can easily practice this thing. You will put psi x here, integrate from minus A to plus A, and you can easily get in a sine form. So this was the easiest formula. And this is solved problem from Griffith. और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, ग्रिफिथ के सारे सॉल्व प्रॉब्लम तो आप जरूर कर लो 100%. उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो होने ही होने हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है. एटलीस्ट सॉल्व क्वेश्चन तो हमने अनसॉल्व क्वेश्चन भी किया हुआ है. मैं आपके अगर टेस्ट सीरीज को देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ग्रिफिथ से, आर शंकर से उठा करके दिया है. अगर आपने टेस्ट सीरीज किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट आप ग्रिफिथ के सॉल्व क्वेश्चन जरूर कर लो. इन जनरल हमने किया हुआ है, बट एक बार आप रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो. सो दिस क्वेश्चन वाज इन योर एग्जाम. तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन, e टू माइनस आई के एक्स को इंटीग्रेट करोगे माइनस ए टू प्लस ए, देन ऑब्वियसली इट विल कम टू साइन फंक्शन. बट एग्जाम में ये नहीं आया था, एग्जाम में प्लॉट आया था. सो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट वॉट एवर यू आर यूजिंग, प्लॉट इट. वॉट एवर यू आर यूजिंग, प्लॉट इट. सो ये आप प्रिपेयर करके रखोगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. और आलोक सर ने जितने भी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कराए हैं उसे आप जरूर कर लो. हो सकता है वो मैथमेटिकल फिजिक्स में नहीं आया है, हो सकता है वो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज हो. सो आलोक सर ने ये फॉर्मूला देकर करवाया होगा, आप चाहो तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी उसे कर सकते हो. मोमेंटम को डायरेक्टली एच कट के
क्लिक करके। सो प्लीज डू द ऑल फोरियर सीरीज। उन्होंने स्टेप फंक्शन के लिए कराया है, होगा डिराक डेल्टा के लिए कराया होगा, गॉसियन का कराया होगा, e टू द पावर माइनस मॉड एक्स का कराया होगा। सी ऑल दिस चार्ट एंड रिवाइज इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नाउ लेट्स गो फॉर हमें क्या क्या प्रिपेयर करने हैं प्री पार्टिकल के लिए। ओके सो ऑब्वियसली फ्री पार्टिकल के लिए आपको फ्री पार्टिकल मींस पोटेंशियल इज इन जनरल जीरो और कांस्टेंट। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। द वेव फंक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ e टू द पावर i k x प्लस b e टू द पावर माइनस i k x। ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। एंड ऑब्वियसली e इज ग्रेटर देन जीरो, e इज ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा हूं। यहीं पर आपको इसके साथ कितनी मोमेंटम एसोसिएटेड होगी, एच कट के। इसके साथ कितनी मोमेंटम एसोसिएटेड होगी, माइनस एच कट के। इसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएटेड होगी, एच कट के स्क्वायर अपॉन 2m, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। सो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है और हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। बट आपको फ्री पार्टिकल को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से यूज करो। एच कट अपॉन 2im साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई del psi star upon del x. And this thing is directly related to your probability density and velocity of a particle. And if I am talking about velocity of a particle, I am talking about momentum by mass. And you can easily go for this thing. So ये आप बहुत ही अच्छे से देखोगे, क्योंकि जब भी फ्री पार्टिकल की बात होगी तो एनर्जी से ज्यादा मोमेंटम की बात होगी। और मोमेंटम को आप इजिली परसीव कर सकते हो करंट डेंसिटी के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में वापस आ रही है, क्या पूरा जीरो तो नहीं है करंट डेंसिटी। ये सारा चीज आपको, क्योंकि करंट डेंसिटी और मोमेंटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। सो जब भी मोमेंटम की बात आए तो आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि उसके वेव फंक्शंस e टू द पावर i के x के फॉर्म में होंगे, दे आर प्लेन वेव इन अ वन डायमेंशन। और मोमेंटम की चीजें आपको एसोसिएटेड होंगी करंट डेंसिटी के साथ। सो यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट रीजन में वेव फंक्शन आपके पूछे जा सकते हैं, आपको उसे प्रिपेयर करना होगा। ओके, एंड दिस इज फॉर ई इज ग्रेटर देन जीरो केस के लिए बात कर रहे हैं। इसी में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल के ऊपर भी बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया है, देन यू हैव टू प्रिपेयर इट। तो दिस वैल्यू इज v नॉट। सो e इज ग्रेटर देन v नॉट के लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाला था, एंड वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। कोई बता सकते हो व्हाट इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट? रूट ई माइनस रूट ओवर ऑफ ई माइनस e माइनस v नॉट बाई रूट अंडर e प्लस रूट अंडर e माइनस v नॉट होल स्क्वायर। एंड यू नो द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज 1 माइनस r। अब देखो ग्रिफिथ में इसी एक्सप्रेशन को किस तरह से दिया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी एक्सप्रेशन को ग्रिफिथ ने कुछ इस तरह से दिया है। उन्होंने ऊपर नीचे क्या किया, रूट अंडर ई प्लस रूट अंडर ई माइनस वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। देन व्हाट यू विल गेट, सॉरी इसके, हाँ दिस से इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट यू विल गेट, रूट ई माइनस वी नॉट रूट ई माइनस रूट ई माइनस वी नॉट इसका होल स्क्वायर। और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, इजंट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो उन्होंने इस Yes, चीज को कुछ इस तरह से लिखा, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन आ जाए, रूट ई माइनस वी नॉट होल टू द पावर 4, समथिंग लाइक दिस, होल टू द पावर 4 एंड नीचे आपका वी नॉट स्क्वायर। सो नाउ यू कैन सी, ये इसलिए दिया जा सकता है कि क्या आप एग्जाम में कहीं परेशान तो नहीं हो, क्योंकि इन जनरल 99% बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, उन्होंने कुछ दूसरे ढंग से टू द पावर 4 के टर्म में इसे लिखने की कोशिश कर दी। सो जस्ट आपको प्रिपेयर इस तरह के प्रॉब्लम को करना है कि किस किस फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है। एंड ऑब्वियसली आपको हर एक रीजन में वेव फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इस रीजन में वेव फंक्शन e टू द पावर i के एक्स प्लस e टू द पावर माइनस i के एक्स, और इस रीजन में वेव फंक्शन और k1x लिख सकते हो, k1x and e to the power I k2x. What is value of k1? That is root under 2m e upon h cut square. And what is value of k2? The value of k2 is root under 2m e minus v naught h cut square. And second thing, for e is less than 0, सॉरी लेस देन वी नॉट के लिए भी आप प्रिपेयर करो एटलीस्ट वेव फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है, बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा टफ क्वेश्चन ही आते हैं, एग्जाम में फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर, if e is less than v naught, you have psi 1x is equal to same thing a e to the power I kx plus b e to the power minus I kx, and you have psi 2x is equal to something c e to the power minus gamma x, where k is equal to root under 2m e upon h cut square and gamma is equal to root under 2m v naught minus e upon h cut square। ये हमेशा याद रखोगे, this will be v naught minus e h cut square and that will be decaying in nature, यहां पर oscillatory होगा and that will be decaying। so ये आपको ध्यान में रखना है, और यहीं पर आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो ट्रांसमिशन probability and that will be e to the power minus 2 gamma। रिमेंबर, इसे हम लोगों ने W के भी अप्रोक्सीमेशन में भी किया था। व्हाट इज वैल्यू ऑफ गामा? सर 2 गामा ए 1 upon h cat x1 to x2 root under 2m v naught minus e dx, है ना? सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ गामा। सो ये भी आप एक बार इजिली प्रिपेयर कर सकते हो कि आपकी कितने देर पर पार्टिकल टनल होगी, सॉरी क्या प्रोबेबिलिटी होगी x डिस्टेंस पर पार्टिकल के टनल होने की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी y डिस्टेंस पर पार्टिकल के टनल होने की। सो यू कैन इजिली गो फ्रॉम दिस, व्हाट इज x1 एंड x2, जिनके बीच में पार्टिकल टनल हो रहा है। so you can easily figure it out, okay? So this is quite simple, quite straightforward, but yes, they are very potential system. Now let's go for a particle in box. So we have a particle in box. So आपको दो तरह के बॉक्स के बारे में बात करनी है, एक 0 to a और दूसरा -a/2 to +a/2। ये आप हमेशा दिमाग में रखोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जैसे पार्टिकल इन बॉक्स होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इनफिनाइट बॉक्स, आप हमेशा 0 to a के बारे में ले लेते हो। नो, ऑलवेज ट्राई टू बी सी दैट व्हाट इज इट्स विड्थ, व्हाट इज इट्स बाउंड्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके लिए क्या होगा, वेव फंक्शन इज √2 अपॉन a sin n pi x upon a, where x is between 0 to a, 0 otherwise. So this is your phi n. And here you have a two wave function. क्या क्या wave function होगा? √2 upon a cos n pi x upon a, x is between, for n is equal to 1, 3, 5,
and that value is equal to 2 by a sine n pi x upon a, n is equal to 2, 4, 6 and so on. Okay, this is very interesting. And 0, and ये किसके बीच में है? This is for x is between minus a by 2 to plus a by 2 and 0 otherwise. And what will be energy eigenvalue? En is equal to n square pi square h cut square upon 2ma square. यहां भी en की वैल्यू क्या होगी? n square pi square h cut square upon 2ma square. Okay, so and what is value of n? N can be written as in both case 1, 2, 3 and so on. What is expectation value of x? Here is a by 2. Expectation value of x is equal to 0. Now let's try to go for, ये सब तो ठीक है, सब आपको पता होगा, लेकिन आपको वर्क कहां करना है? आपको वर्क करना है कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर. सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर इंटीग्रेशन. इसे मैं आपके लिए लिख करके लाया हूं और आप इसे प्रॉपरली तैयार करके रखोगे ताकि एग्जाम में आपका समय मिनिमम लग सके. सो लेट्स गो फॉर 5 and 6 बेसिक इंटीग्रेशन related to particle in a box. So let's try to go for this. So the first integration, you have to just go for 0 to a t sin t. इस तरह के इंटीग्रेशन आप, मैं t के फॉर्म में दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है? पाई एक्स बाई ए को, n पाई एक्स बाई ए को आप t पुट कर दो एंड देन यू कैन यूज इट. ओके, तो समथिंग लाइक दिस. अगर ये फॉर्मूला ये है तो दिस इज माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए. इस तरह का इंटीग्रेशन कहां यूज होगा? इस तरह का इंटीग्रेशन कहां यूज होगा? जस्ट टेल मी. जैसे आपको किसी ने दे दिया साई एक्स इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे आप बेसिस ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट के बेसिस में लिखिए या फिर इसका टाइम एवोल्यूशन निकालिए, टाइम के साथ ये कैसे इवॉल्व करेगा. तो आप क्या करोगे? यू हैव टू सपोज सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, यू हैव टू just write your psi x t as summation over cn phi n e to the power minus I e n t upon h cat, और वहां पर आपको cn की वैल्यू निकालनी होगी, isn't it? And how you will get the value of cn? That is your phi n psi. इसी से आप cn की वैल्यू निकालोगे और जब phi n psi लिखोगे तो what is your phi n? That is your sine n pi x by a, and what is your psi? Psi is equal to x a minus x, और आप इंटीग्रेट करोगे 0 to a. So here you have to use this type of integration, है ना? Are you getting my point? तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा then it will take a lot of time. So इस तरह के प्रॉब्लम के लिए, और ये भी ग्रिफिथ के अनसॉल्व प्रॉब्लम है, एग्जाम में भी आ चुका है लास्ट टाइम, बट आप फिर से इसे चेक कर सकते हो. ओके, सो दिस इज वन इंटीग्रेशन. अनदर इंटीग्रेशन इज 0 टू ए टी स्क्वायर साइन टी, एंड दिस इंटीग्रेशन इज -2 माइनस ए स्क्वायर -2 कॉस ए प्लस 2a साइन ए. मे भी एग्जाम में इंटीग्रेशन दे भी दे आपको, बट अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो इस तरह के क्वेश्चन को तो बेटर रहेगा. बट नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 0 टू a by 2 2 by a साइन पाई एक्स बाई ए साइन 2 पाई एक्स बाई ए. बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? हम लोगों ने कई बार किया है इंटीग्रेशन.
जस्ट टेल मी। अब बाय द वे अगर वैल्यू नहीं याद है तो कैसे करोगे इसे? बताइए। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर साइन 2 पाई एक्स को आप ओपन कर सकते हो, 2 साइन पाई एक्स बाई ए इंटू कॉस पाई एक्स बाई ए, तो वहां से भी कर सकते हो। बट बेटर आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। दैट वैल्यू इज 4/3 पाई। ओके, नाउ 2 बाई ए 0 टू ए एक्स साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए डीएक्स, क्या होगी वैल्यू इसकी? बताइए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन? सर a/2। a/2। ओके, नेक्स्ट आई कैन यूज दिस स्पेस। ये सारे इंटीग्रेशन आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि एग्जाम में कोई गलती नहीं हो। ओके, सो 2 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू ए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए डीएक्स, what will be this value? So you can just check it. A square 1 by 3 minus 1 upon 2n square pi square. Okay, again 2 by a minus a by 2 to plus a by 2 x square sin square n pi x by a dx, where n is equal to 2 4 6। ये कहां यूज करोगे? सिमेट्रिक बॉक्स के लिए। एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू, सो यहां लिखूं a स्क्वायर 1 by 12 minus 1 upon 2 n square pi square, and again 2 by a 0 to minus a by 2 to plus a by 2 x square cos square n pi x by a dx, n is equal to 1 3 5। this will also same thing। okay, and last but not the least, ये दोनों के लिए सेम इंटीग्रेशन, a स्क्वायर 1 by 12 minus 1 upon 2 n square pi square, and last integration, this is very famous, 0 to a 2 by a 0 to a by 2 sin square n pi x by a dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2। 1/2। ओके, सो एटलीस्ट आप इतने तो इंटीग्रेशन जरूर तैयार कर जाओ, और तभी आप एग्जाम में पार्टिकल इन बॉक्स के क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि पार्टिकल इन बॉक्स के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें कैलकुलेशन होगा ही होगा, इंटीग्रेशन होंगे ही होंगे, और इन जनरल ये इंटीग्रेशन आप अगर प्रिपेयर कर जाते हो देन ऑब्वियसली ये आप छोड़ भी सकते हो, बट ओके जस्ट डू इट, एक बार कर लो जरूर। और मैं एक याद करने की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट गो एंड डू विथ योरसेल्फ। जाकर एक बार आप करके देखिए और फिर उसे याद रखिए, ताकि एग्जाम में अगर कुछ पैरामीटर चेंज हो तो भी आप उसे कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स। आप पार्टिकल इन बॉक्स के लिए ये थोड़ी प्रिपेयर करोगे कि साइन एन पाई एक्स बाई ए होता है या नहीं, आइगन फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है। यू हैव टू प्रिपेयर ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होगी, ना कि ये एग्जाम का प्रिपरेशन होगा कि आप बेसिकली उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तैयार कर याद करके, उसको याद नहीं करना है। वो तो आप अगर आईसीयू में भी हो तो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट, हाउ मेनी नोड्स आर देयर? नंबर ऑफ नोड्स इन nth स्टेट, बताइए, फॉर पार्टिकल इन बॉक्स। n-1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्टिकल इन बॉक्स। अब मैं
नेक्स्ट आपको, सो आई थिंक मेरा टाइम फिनिश हो रहा है, सो ओके, सो आज यहीं तक करो। सो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन पोस्टुलेट्स के, कुछ ऑपरेटर्स के और कुछ पार्टिकल इन बॉक्स के सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप पर। कल हम लोग बाकी सारे चीज को इजिली कर लेंगे, ठीक है? सो डोंट वरी, वी विल रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी नाइस वे। क्लियर है ये? ज्यादा हुआ तो 4 क्लास लग जाएगा, बट आई डोंट थिंक, बिकॉज लास्ट वाले में तो कुछ रिवाइज करना नहीं होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज जाकर सबसे पहला काम कीजिए, ये सारे इंटीग्रेशन को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? So this is very important. Okay. So I will stop here and tomorrow I will go for a next part. And obviously आप थोड़ा वेव फंक्शन वगैरह भी प्लॉट कर लेना, है ना? This will be your ground state. इसलिए मैंने n-1 लिखा. And this will be your first excited state. What will be role of parity? है ना? ये सारा आप इजिली देख पाओगे. ओके, सो एटलीस्ट डू दिस इंटीग्रेशन, है ना? आपका एग्जाम में क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन कैलकुलेशन करवाएगा ही करवाएगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। थैंक यू सर।